Hello and welcome my dear students. In this session we'll be discussing the expected cutoff scores of SRCC GBO examination for this year. As the response sheet is out yesterday, I did analyze a few scores of my students and the students were requesting for expected cutoff values. So this session, a very short session is there. You can connect me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT-MBA. So before expecting the cutoff scores for this year, we should also analyze the cutoff values for previous 2 years. So in 2022, since the paper was slightly comparatively easier, so that is why cutoffs were generally high. Or in 2023, the paper was relatively quite difficult and that is why cutoffs were tentatively low. इस ईयर का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है, पहली चीज तो उसमें एक सरप्राइज था. दैट सरप्राइज एलिमेंट वाज द सेक्शनल टाइमिंग, जो कि इससे पहले किसी भी ईयर में SRCC GBO में नहीं रही है, बट दिस ईयर दैट सेक्शनल टाइमिंग वाज देयर. तो ड्यू टू दैट सरप्राइज एलिमेंट कुछ स्टूडेंट्स का डेफिनेटली स्कोर अप डाउन हुआ होगा डेफिनेटली, बट इन जनरल पेपर वाज ईजियर. स्पेसिफिकली इंग्लिश का सेक्शन और LR का सेक्शन वाज क्वाइट ईजियर और DI was also comparatively easier compared to the previous year, but quant was difficult. So that is why the tentative scores that I am thinking for this year will be as follows. So for the unreserved category, the score should be between 270 and 280. 270 is the lowest value of the cutoff as per my knowledge expectation. ठीक है, these are tentative scores, these are not exact values, can go lower. ठीक है, can go lower. So if you are standing on 270, there is a good chance that you will be clearing the cutoff. But if you are above 280, then definitely you must clear the cutoff. Okay? So 270 to 280, this is a range that I have taken of 10 marks. For EWS, this should be between 255 and 265. For the OBC category, this will be slightly lower at 235 to 245. For SC, it will be 185 to 195. And for ST, this will be 125 to 135. अब PWD का cutoff तो exactly predict नहीं कर सकते because depends on various factors, but it should be between 80 and 90. Or this all cutoff depends on the shortlisted candidates, which are 6 times of number of seats. The number of seats for general category for unreserved category is 31. So 31 into 6, approximately 186 candidates will be called out. ठीक है, अगर एक दो स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली 186 के बजाय 185 हो सकता है, 187 हो सकता है, 188 हो सकता है. Similarly for all the other categories. So this is my expectation for the tentative scores. और अगर तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली जो रेंज है उससे ऊपर आ रहा है तो यू आर इन. बट देयर इज वन मोर सरप्राइज दैट कैन हैपन दिस ईयर. आई एम नॉट सर्टेन, बट दैट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज वी हैव सीन सेक्शनल टाइमिंग दिस ईयर. तो दिस इज हाफ द सर्कल. अगर सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी डिनाइड, सेक्शनल कट ऑफ कैन ऑल्सो बी देयर. एंड इफ सेक्शनल कट ऑफ हैपन्स, the overall cutoff will go lower than these values. So if that happens, अगर सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस करते हैं, कितना करेंगे उस पर डिपेंड करेगा. वी डू नॉट हैव इनफ डेटा टू एनालाइज दोज वैल्यूज, बट दैट इज फॉर श्योर कि अगर सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस होता है तो ओवरऑल कट ऑफ विल बी गोइंग डाउन बाई 10 to 15 मार्क्स, यानी कि 260 to 55 भी पहुंच सकता है जनरल का कट ऑफ. और फॉर एवरी अदर कैटेगरी देयर कैन बी अ डाउनफॉल ऑफ 10 to 15 मार्क्स अगर सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस होता है. तो इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इतना डाउनफॉल जरूर हो सकता है क्योंकि कुछ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे ड्यू टू सेक्शनल कट ऑफ, स्पेसिफिकली इन क्वांट सेक्शन और इन इंग्लिश सेक्शन एज वेल. अगर इंग्लिश में किसी ने ज्यादा डाउन किया होगा, क्योंकि कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कट ऑफ का वैल्यू क्या रहेगा. बट अगर कट ऑफ इंट्रोड्यूस होता है इन दैट केस, अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है क्योंकि 1 महीने बाद ही रिजल्ट आएगा, तो वेट तो नहीं कर सकते. यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स. जो भी एग्जाम तुम दे रहे हो, अगर CET का एग्जाम दे रहे हो या CUT का एग्जाम दे रहे हो या CMAT का एग्जाम देने वाले हो, प्लान करने वाले हो, तो अकॉर्डिंगली डू प्रिपेयर वेल. ठीक है, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ द कट ऑफ्स. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना है. अगर यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न और डाउट, देन यू कैन ऑलवेज आस्क, ऑलवेज कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम. ओके, दैट्स ऑल. बाय, टेक केयर.